हेलो गाइस। मेरा नाम दी ओल्ड ब्रेड और आप सबका मेरे चैनल पे बहुत बहुत स्वागत है गाइस। तो आज 2 ऑफ नवंबर है और आज हमारा फिर से कस्टम रूम होने वाला है गाइस। तो पहला जो कस्टम रूम है वो क्या नाम है, कस्टम रूम नहीं, पहले जो मैं गेम खेलूंगा वो है मर्डर ऑन द ओरिएंट एक्सप्रेस। ये एक डिटेक्टिव टाइप का एक गेम है और इसमें सबसे पहले इसको थोड़ा देर खेलूंगा, फिर मैं एग्जैक्टली 8 o'clock पे आऊंगा, अपना क्या नाम है बीजीएमआई स्टार्ट करूंगा और बीजीएमआई का कस्टम रूम है गाइस। तो जिन्हें भी बीजीएमआई का कस्टम रूम खेलना है प्लीज तैयार हो जाइए, एटलीस्ट हमें इन्फॉर्म कर दीजिए या फिर चैट पे आके बता दीजिए, जैसी आपकी इच्छा वो आप देख लीजिए। लेकिन इन्फॉर्म जरूर करिए गाइस प्लीज, ठीक है। तो फिलहाल अभी के लिए चलते हैं, हम लोग खेलते हैं अपना नॉर्मल जो भी है मर्डर ऑन द ओरिएंट एक्सप्रेस। फिर उसके बाद हम लोग एटलीस्ट हमें इन्फॉर्म कर दीजिए या फिर चैट पे आके बता दीजिए, जैसी आपकी इच्छा वो आप देख लीजिए। चलो खेलते हैं मर्डर ऑन द ओरिएंट एक्सप्रेस। Now that we've taken your DNA, we can begin. Interview of suspect Michael Clark, 6 p.m., March 30th, 2019. This interview is being recorded. By elves behind the mirror, no doubt? You were arrested at a crime scene where you damaged police barricade tape. I'll pay for a new roll. That's a Class A misdemeanor, and it carries a $500 fine. Oh, that's unfortunate. To begin with, where were you on the night Daisy Armstrong was kidnapped? I was watching TV in my motel room, but I had my police scanner on. I heard the first reports that the little girl was missing. No way the police at the scene were going to let me get close. I set my alarm so I could get on the story first thing in the morning and tried to sleep. It was difficult. Can anybody confirm where you were? No, afraid not. I was alone and sleepless. A sad combination. And I realized a bad alibi. Okay. Let's start with why you went to the cabin. If the police were interested in it, I was interested in it. How did you find the cabin? Police radio. I heard the forensic team getting directions. Then, when they finally left the scene late this morning, I jumped in my pickup and hurried on up the mountain. You tore the tape at the entrance to the property and stomped all over the house. This constitutes a serious violation of a crime scene, Mr. Clark. I'm aware of that. I'm sorry. I'll pay the fine. But I got carried away. It isn't often I get a crime scene all to myself. He's enjoying himself. I need to throw him off balance somehow. Surprise him into making an error. Explain to me again how you got to the crime scene. I listened in on the police radio frequency. Anybody can do it with a scanner. I headed for the crime scene in my trusty pickup, like I've done for years. After the forensic team left, I needed to see the crime scene for myself. I got to the bunker just before you arrived. ओके इसमें से ये जो बातें कही हैं, इसने कुछ बातें जो गलत है। तो आई लिसन इट ऑन ए पुलिस रेडियो फ्रीक्वेंसी, एनीवन कैन डू विद अ स्कैनर, ठीक है। I headed for the crime scene in my trusty pickup like I have done for years. After the forensic team left, I needed to see the crime scene for myself. I got to the bunker just before you arrived. It won't be easy to prove he's lying. Find some evidence. I need proof, not guesswork. You said you've been driving that pickup for years? You heard right.
Thanks to it, I never miss a story. I called Boston 6 News. They didn't tell me you were working on the Armstrong case. Every news outlet had breaking news on finding the kid's body. I need a new angle for them to run with. I need to give them something exclusive. That's right. The editor, Abby Wilson, said they hadn't heard from him for months. I found your driver's license in your truck. It's not a great picture, but it's me, all right. If it's a fake, it's a really good one. Looks authentic. You say you've been using your pickup for years, but the title certificate is not in your name. The truck belongs to somebody named Stephen Baker. Okay, I don't get why the pickup is so important to you, but I guess my ego made me say that. Yeah, the pickup was lent to me by a friend. I couldn't afford it even with a loan. I think you stole it, Mr. Clark. You needed a pickup like that for our mountain roads, so you stole that one. Try proving it. But while you run off on some wild goose chase, you can't hold me. Okay, interview Mr. Clark. Yes. Let's move on to the gas cans and what we found in your pockets when you were brought in here today. That sounds exciting. How did you know there was a bunker at the end of the property? How did your forensic team miss it? They were concentrated on the cabin. It was pitch black out there. Small town cops with small town minds. I'm sorry, that was unkind. You know, I'm a bit like you. My job is to find something a news program's viewers want to see. You do it for justice. I do it for money. I just have more flair than you. I know you're lying, Mr. Clark. I followed your footprints from the cabin, and they led directly to the bunker. It was very well hidden. You had to know it was there. Think whatever you want, detective. Journalist reporter. You say you're a journalist, a stringer for Channel 6 News in Boston. I sell my stuff to lots of media outlets. How is your editor doing? Last time we spoke, she was fine. But that was months ago. What's her name again? I work for lots of stations and lots of editors. She knows your name, but you don't remember hers? I'm not great with names. It's Kelly Johnson. Oh yeah, Kelly. I just made that name up. Good for you. Her name is Abby Wilson. Mr. Clark, you lie like you breathe. Huh. Well, that was mean. He thinks he's invincible. I need to play his ego. That's the key. What are you doing in the Berkshires? And what is your connection to the Armstrong case? For the past few months, I've been working on a big case. Boston 6 News was looking forward to my next story. The Armstrongs have been on my list of potential targets for a long time. I changed gears when Daisy was kidnapped and started investigating the Armstrongs. Come on, Joanna. You're a better detective than that. Where's a lie detector when you need one? So you just stumbled on a major kidnapping story during your stay in the Berkshires. Yeah, I was researching PCBs in the river for crying out loud. Then, wow, the Armstrongs. That's not a Science Sunday report. That's a lead. Sometimes you just get lucky. Your camera in the pickup. There were photos of Daisy from before she was kidnapped. The Armstrongs are a famous family like the Kennedys or Hollywood couples. Gossip sites love them. People want to see how they live. I started out just stealing candid shots. Paparazzi live on getting that one exclusive shot. Steamy, intimate, whatever. Then when the kidnapping happened, I realized I was here first. What an opportunity. And I jumped at it. You have an answer for everything. You're not very good at this, are you? How long have you been on the job? Long enough to put you away for life, if you killed that little girl. I know that Clark is lying.
I need to reconstruct the whole sequence of events in order to understand what happened. Okay. तो जो ये जो डिटेक्टिव है, इसको लग रहा है कि यही जो बंदा है उस छोटी सी बच्ची का किडनैप किया है और उसका मर्डर भी किया है। तो ऐसा क्यों लग रहा है? क्योंकि ना जो गैस कैन है, एग्जैक्टली गैस कैन जो मिसिंग है, वो गैस कैन उस बंकर के अंदर मिला। तो मुझे लगता है कि ये बंदा उस बंकर से निकल के बाहर आ रहा था, ठीक है? तो और उस बाहर आते ही इसने पकड़ लिया। So I have to able to construct the event. उस बंकर से जैसे ही वो बाहर आ रहा था वैसे ही इस डिटेक्टिव ने पकड़ लिया। तो उसके पास और कोई बहाना नहीं था, तो यही बहाना मारा। तो हमको लगता है ये एक मर्डर केस भी करता है और रिपोर्टिंग का भी काम करता है। Put the event in order to find the right chronology. आई अराइव एट द, जब मैं वहां पहुंची तो ये टूटा हुआ था। ये पिकअप लिया, ये डोर खोला, ये फेंका, नहीं नहीं नहीं, ये इधर है, ये बंद किया, ये खोला और हमसे मिला। कंफर्म। देखे यही हुआ था, वो पहले घुसा घर के अंदर। One for the good guys. I'll tell you what really happened. You waited until forensics left and arrived in your probably stolen pickup. You grabbed a can of gasoline from your truck. You then went into the cabin to check if Daisy had been found. You then went straight to the bunker to see if it had been discovered, planning to set it on fire and destroy all the evidence inside. Before you could start the fire, you heard me arrive. So you hastily left your gas can and closed the hatch. You didn't think I could open the bunker. If I hadn't found you, I expect you would have burned down the cabin too. I'm not going to make fun of you, Detective, or how you handled my interrogation. You're obviously very new at this. I swear I'm telling the truth. I didn't know the bunker was there until the moment you showed up. I seem to have trumped your entire police force. When I get the DNA results from the bunker, we'll continue this conversation. You have no concrete evidence against me whatsoever. The lab results will be in soon. You won't get away with this. See that call? That's your arrest warrant and a one-way ticket to prison. I'll be right back. Hello, sir. I think I found the man who kidnapped Daisy Armstrong. I'm interrogating him now. Hold on, Detective Locke. I have some bad news. Someone set fire to the cabin in the bunker. The fire department is on the scene, but they say it's too late. That's impossible. My suspect has been in the interrogation room with me all evening. We can't hold him. Suzanne Moreau. Her fingerprints are on the wine bottle found in the cabin. We also found an unknown person's fingerprints, but they don't match your suspects. Sir, with all due respect, I'm convinced Michael Clark is involved. Detective, I'm cutting you some slack already, but we cannot hold your suspect simply because you're convinced he's guilty. We have evidence that Suzanne was working with an accomplice, Noah Garrity. I order you to release the reporter and arrest this Moreau. Let me just check my last lead. The DNA analysis of the hair found in the bunker safe. The results just came in. I know how hard this is. Okay. Get the DNA results. Detective Locke, I will give you 1 hour maximum. Then you close the file and arrest Suzanne Moreau. Thank you, sir. गड़बड़ा गया।
Who did you call earlier? An editor from the Boston 6 News. An editor you repeatedly said should fire you. That was your accomplice, wasn't it? You were telling him to start the fire. An accomplice? I know it was Noah you called. I'm saying nothing more without the presence of my lawyer. Stay right where you are. I'm not done with you yet. Wow. Do I hear grounds for a lawsuit? Some poor innocent woman is being accused instead of you. You set her up, didn't you? You have to let me go, detective. All I need is one more phone call to the lab. I know it's you, and I'm going to prove it. Hello, this is Joanna Locke. I need the results of the DNA test I asked you for. Hi, Detective. Sorry, we only have the DNA sequence. We haven't had time to compare it with the suspects yet. It'll take 7 more hours. I'm sorry, but you are not the only one on the waiting list. Send your analysis to my computer in the office. I'll do the comparison myself. I need authorization. I have a murderer who is going to walk free unless I get those results now. Fine, we'll send it to you right away, but I'll have to log this. It's my last chance. कंपेयर द डीएनए रिजल्ट। तो डीएनए रिजल्ट ये आ गया है, नहीं आएगा, ये मेरा कंप्यूटर है भैया, इस पे तो डीएनए रिजल्ट मैच करेंगे। वैलिडेट। तो अननोन डीएनए फाउंड इन द कैबिन, ये डीएनए है ATCG जो भी है। जॉन आर्मस्ट्रांग डीएनए, ओके। Michael Clark DNA. Okay. Okay. No! Suzanne? I don't understand. I was sure it would be Clark's hair. I'll have to let him go. Okay, तो सुजैन मरो का हेयर कैसे आ गया यार वहां पे उस बंदी का? ओके यार, ये मर्डर है कि नहीं कुछ कह नहीं सकते, लेकिन हाँ वो बंदी छूट सकती है। You can leave. Sorry it didn't work out for you, Detective. Maybe you should consider a career change. We are not done. Oh, but we are, my dear. We are done. तो ये I had some no choice but to return to the Armstrong house to arrest Suzanne Moreau. ओके, तो सुजैन मरो एक्चुअली उसकी नैनी है, उस बच्ची की नैनी है जो उस बच्ची को खिलाती है। तो अभी तो मर्डर का चार्ज और किडनैपिंग का चार्ज उसी पे लगा है, सुजैन मरो पे जो उसकी नैनी है, लेकिन उसका कोई ना कोई बॉयफ्रेंड है जिससे वो बात करती थी। ठीक है, देखते हैं क्या होता है आगे, स्टोरी में पता चलेगा क्या क्या हो रहा है क्या क्या नहीं हो रहा। अभी तो मेरे लिए भी पहली बार है तो मुझे ज़्यादा कुछ पता नहीं है, लेकिन वो बंदा अपने आप को रिपोर्टर बता रहा था। The arrest warrant for Suzanne Moreau. Suzanne was set up by Clark and Noah. They are the kidnappers, but I'm not giving up. When Suzanne comes up for trial, I will fight for her defense. But for now, the district attorney is in charge. If I want to stay a detective, he always has the last word. Suzanne was set up by, but I'm not giving. But for now, if I want... तो ये सुजैन जो उसकी नानी है सब उसी को सेटअप मतलब उसको फंसा दिए हैं
क्या ही किया जाए, अब जो सिचुएशन है उसको सॉल्व करना The पड़ेगा। door is wide open. How strange. How strange. भाग गई है क्या सुजैन मरो? Hey, is anyone there? Miss Moreau? Miss Moreau? This is Detective Locke. Miss Moreau, can you hear me? It's me, Detective Locke. You must get up now. Miss Moreau? Miss Moreau, can you hear me? Suzanne Moreau is dead. There are no traces of blows or injuries on her body. She doesn't seem to have defended herself from anyone. ओके, पता लगाना पड़ेगा क्या हुआ, ये क्या है? Dear Miss Morrow, please forgive this letter. Dr. Adams have been unable to reach you for several days. We wanted to let you know that your mother passed peacefully during the night of Saturday, March 29th. Please contact us if you would like assistance with the arrangement for her. If there is anything else. Oh भाई साहब, उसकी माँ मर गई है. I killed Daisy. I was scared she would tell if I release her from the cabin alive. I can't live with myself what I have done. I am Faye 69. Pray for Daisy. It's the nanny. She responsible for poor child. She must have realized at last how she'd been used, and the self-righteous court of social media was as quick as usual to try and convict her. Okay. She must have realized at last, and the self... Suzanne's diary is missing. सुजैन की जो डायरी है वो भी मिसिंग है. Okay. Her glasses are missing. चश्मा मिसिंग है और डायरी मिसिंग है, तो कोई तो पढ़ रहा होगा हमको लगता है. अब हमको वो करना है, क्या कहते हैं. ओके, फार्मा स्लीप 3000 स्लीपिंग पिल्स. टेक अ पिल बिफोर गोइंग टू स्लीप. 20 पिल्स. ये पूरा खा लिए क्या? It appears Suzanne killed herself by ingesting all these drugs. तो जो बंदी लेटी हुई है, जो डेथ डेथ की मतलब मरी पड़ी है, वो एक तरीके से वो है, क्या नाम है, उस बच्ची की नैनी है जिसको खिलाती थी और उसका डेथ हो गया. Nothing's been touched. It's as if Daisy might walk in at any moment and begin to play. I found that Suzanne dead in her room. I need to understand what happened. एक चीज और मिसिंग है, उसको हमको सर्च करना पड़ेगा. क्या मिसिंग है? चलो चलते हैं. यही रूम है ना? नहीं, ये नहीं रूम है, वो रूम है. एक चीज और मिसिंग है जिससे पता चलेगा सुजैन का डेथ कैसे हुआ है. एक तो ये भी है मदर का.
She must have realized at last how she'd been used, and the self-righteous court of... She must have realized at last, and the self-righteous... और क्या चीज मिसिंग है, हम भी मिस कर रहे हैं। Suzanne's diary is missing. सुजैन की डायरी मिसिंग है। Her glasses are missing. ये उसकी रिंग है, पता नहीं उसने दिया था कि क्या किया था, मतलब इसके बॉयफ्रेंड ने दिया था कि क्या किया था पता नहीं। और डोर भी खुला है, क्यों डोर खुला है, उसको भी चेक किया जाए थोड़ा। और मिस्टर आर्मस्ट्रॉन्ग कहाँ है, वो भी नहीं दिख रहे हैं। ये प्यारी बच्ची का फोटो देख रहा है ना, यही वो बच्ची है जिसका वो किडनैप हुआ है, जिसको क्या नाम है, डोर कैसे ओपन हो सकता है भाई। बिल्ली वहां कैसे पहुंच गई। I'd rather finish what I have to do here before leaving. क्या चीज अभी भी मिस हो रहा है, हमको समझ में नहीं आ रहा है। Nothing's been touched. It's as if Daisy might walk in at any moment and begin to play. अरे तो ये दवा खा के तो मरी है, और कैसे मरी होगी। It appears Suzanne killed herself by ingesting all these drugs. इसकी डायरी कहाँ गई भाई। हाँ
अरे यार कहाँ गई, कहाँ गई, कहाँ गई? Suzanne Morrow. The glasses are missing. The glasses are missing. ग्लास कहाँ चला गया? अच्छा हाँ, ये भी तो हमको ग्लास भी नहीं मिला, ग्लास और डायरी दोनों ही नहीं मिली। कहाँ जा सकता है ग्लास? क्योंकि हमको इसका ग्लास और डायरी दोनों ही नहीं दिख रहा है। सर्च द रूम फॉर मोर एविडेंस, और ज्यादा कोई एविडेंस दिख भी नहीं रहा हमको। Suzanne's diary is missing. नीचे चला जाए, नीचे देखा जाए, डायरी और ग्लास है क्या नीचे? ये अलग समस्या है भैया, डायरी नहीं दिख रही है। ये रूम नहीं खुलेगा, ये खुलेगा, ये नहीं खुलेगा। चलो इसी में सर्च करते हैं।
हमको एक और क्लू चाहिए जो जिससे जानना है कि इसकी डेथ कैसे हुई है। कोई और क्लू दिखा भी नहीं रहा मतलब। Suzanne was telling the truth about her mother. I called the district attorney to inform him. This is Detective Locke, sir. I'm at the Armstrong house. Have you arrested Suzanne Moreau? She's dead, sir. Apparent suicide, but I need a forensics team. She killed herself out of remorse for her part in the crime. We don't know that yet. I'm calling forensics now, but I wanted you to know. What a mess. Stay on site until forensics arrive. Yes, sir. Standing by. The investigation was officially closed. I was certain that she was innocent, and Clark had been responsible for 4 deaths and then vanished into thin air. With $1 million. Dollars marked, though, and not easily spent. I didn't care if the case was officially closed. I swore, Mr. Poirot, whatever it took, I would hunt him down. अच्छा, तो अभी तक यहाँ तक आई है। और कुछ? चलो देखते हैं। तो एक्चुअली हुआ क्या कि भैया नैनी को लगा कि भैया हमारी वजह से सब हुआ है, मतलब एक्चुअली नैनी का ही बॉयफ्रेंड था वो। अब दिसंबर 17, 2023। I waited for the forensics team, then went into the station to write my report. I was officially off the case. Thank you, mademoiselle. That obviously cannot be the completion of your story. If I might ask a question? Of course. Suzanne Moreau's boyfriend, the one who manipulated her and burned down the cabin, this was Ratchet? No, he was an accomplice. Clark, the phony journalist, was the leader. Michael Clark, the reporter, he was Ratchet? Absolutely. I was the only law enforcement official to question Clark. I knew this wasn't his first kidnapping. You looked for similar cases. What do you Americans call the MMOs? Means, motive, and opportunity. Yes, I looked for someone in plain sight. Someone on the edge of a kidnapping case. Someone in plain view, keeping track of the investigations. An innocent witness, a concerned neighbor, even another reporter. And eventually you found a name behind an alias. Yes, I found a name. Cassetti, the real name. The real name of the man you call Ratchet is Cassetti. This explains much, mademoiselle, but not all. It explains why she is our #1 suspect. But not how she came to be on this train. Attends, she has grown pale. I don't know what's wrong with me. Excuse me, Mr. Poirot. I don't feel very well. You are exhausted and still feeling the effects of the drug. Stay with us, mademoiselle. One more effort. I need to know your recent movements. I snuck aboard the train. This I observed. You came directly to this room? Yes. Yes, and other than a couple of careful trips to the ladies yesterday, I never left this room. I didn't want to be spotted by Ratchet. Yesterday, I chatted with my roommate, Miss Schmidt, I think, here in our room. She brought me some dinner. I got very sleepy and nodded off. And now she nods off again. Is this a joke? She must be faking, so we can't interrogate her further, Poirot. No, Book. She really seems to have fallen asleep again. It is my fault. She must have been given a dangerous dose of sleeping pills last night. The effects should wear off soon, I hope, but I am afraid asking her to tell us her story was too much for her. Pinch her, Poirot. She's faking. Her eyes are dilated. She is not faking, and there will be no pinching. Dr. Constantine, please stay with her. Monsieur Book, ask the other passengers to gather in the dining car. There are still many questions I need to ask. But all of them together?
Won't someone overhear you questioning the others? I will speak softly because I am trained to do so. They will speak softly because they want to. Very well. I will do as you say. तो चलते हैं. I'll stay here to watch over Miss Locke. सस्पेक्ट्स को इंटेरोगेट किया जाए गाइस. फर्स्ट क्लास. फर्स्ट क्लास के बाद सीधे चलते हैं बार. बार के बाद हमारा रेस्टोरेंट आ जाएगा. I hope we will be leaving soon. अरे वाह कितना उखड़ के बतिया रही है भाई. I should go and interview the passengers in the restaurant car. I should go and interview the passengers in the restaurant car. Okay. The passengers who agreed to come and talk to you are assembled, Poirot. Mr. Masterman is already here to answer your questions. Perfect. Thank you, my friend. Sit down, Monsieur Masterman, please. Thank you. Does the name Cassetti mean anything to you? No, should it? Have you heard of the Armstrong kidnapping case? Of course. It was all over the news a few years ago. Your employer's real name is Cassetti. He was the man behind that kidnapping. Mr. Ratchet was... He murdered that poor little girl? Mr. McQueen, the man you worked for is a kidnapper named Cassetti. What? What kidnapping? He murdered his victim, a child named Daisy Armstrong. The Armstrong kidnapping? You had no idea of Monsieur Ratchet's real name? Damn skunk. Why are you so upset? My father was the district attorney who handled the case, Mr. Poirot. I saw Mrs. Armstrong more than once. She was a lovely woman, so gentle and heartbroken. If ever a man deserved what he got, Ratchet, or Cassetti, is the man. He didn't deserve to live. Madame Olson, have you heard of the Daisy Armstrong case? No, I've never heard of it. It was only 2 years ago. It was famous. Maybe so, but it was not famous in Spain, where I have been helping the refugees from Africa. You've never heard the name Daisy Armstrong? No, never. Daisy Armstrong? No. 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 Yes. It was all over the English tabloids before I went to Jordan. A horrific crime that claimed the lives of an entire family and their wrongfully accused nanny. That's right, isn't it? Quite so. I thought the culprit had been punished. Some might say that the culprit was punished last night. Oh, my heavens. May I ask you a few more questions? Yes, yes, of course. You read about the crime, as you said, in the tabloids. Yes, that's right. For weeks, news of the royal family was eclipsed. Have you ever been to the United States, mademoiselle? No, never. Jordan was really my first trip abroad. You were in Jordan? Yes, I was an English tutor there to the children of a high official. Until recently. What is your relationship to Captain Arbuthnot? Who? A former soldier traveling with us. You must have met him. Ah, yes, I met him on the platform in Istanbul. We only had a brief exchange of pleasantries, nothing more. British Reserve and all that. Ah, the British Reserve. Yes, with this I am familiar. एक्चुअली ये जो बंदी है ना, ये इस प्लेन में एक आदमी ट्रेवल कर रहा है जो कि एक्चुअली ब्रिटिश
आर्मी से कैप्टन होके रिटायर हुआ है। तो ये दोनों अपने रिलेशनशिप को छुपा रहे हैं, वो कैप्टन और ये बंदी। तो हमको अब यही डिटेक्ट करना है कि ये ब्रीफ डिस्कशन किए कि क्या किए हैं। I know there is a clue somewhere to prove she's lying. She may be telling the truth, but I cannot be certain. That does not prove she's lying. Are you sure everything you have told me is accurate, Mademoiselle Debenham? Of course. Mademoiselle, I know that you met Captain Arbuthnot at the Tocatlion Hotel. You were spying on me. I am very attentive to my surroundings. It helps in my profession. Well, it's your word against mine. I had occasion to be of some assistance in recovering Captain Arbuthnot's train ticket. While searching his room, I also discovered one of your earrings. Whatever your relationship may be to the good captain, I doubt it has anything to do with British Reserve. You will not tell me your secret, mademoiselle? I can't. I don't know what you mean. Poirot, Miss Debenham's got nothing to do with this business. Nothing. Do you hear? Archie, stop. Captain, no! This behavior is unworthy of an officer and a gentleman. Leave her alone. Have you no honor? Archie, we should go. Captain Arbuthnot, I am certain you are a brave soldier, but you are a poor actor. The truth is that forgive me, but your chivalry is like the smoke screen from your e-cigarette. What? Forgive me, but it is overdone, this. And I ask myself, what is your gallantry really hiding? And what does it have to do with the murder? Your relationship with Miss Debenham is beyond doubt, Captain. Your reaction was apparently that of a man trying to protect the woman he loves. I might understand that if your relationship was some cleverly disguised secret, but it is not. You make puppy dog eyes at one another at every opportunity. You cannot hide your love. Everybody knows. I advise you to stop with your accusations, Mr. Poirot. I'm going to escort Miss Debenham back to her compartment. Make of that what you will. The captain and Mademoiselle Debenham are obviously adamant about not revealing their relationship, but this scene convinced me there is more that is not so obvious. This murder has everyone on edge. In my 25-year career, I have never seen such madness aboard the Orient Express. I understand, my friend. The more we learn, the more perplexing this train ride becomes. But we have other clues to pursue. What do you have in mind? The broken watch on Monsieur Ratchet's wrist, for example, and the handkerchief found near the body. Who does that belong to? This little drama we have just witnessed has not put you off the scent. Far from it, my friend. Will you return to your watch over Mademoiselle Locke? Yes, I will. Dr. Constantine can probably use a break. Good. Au revoir, Poirot. तो वही दोनों थे, वो जो कैप्टन और वो बंदी। ओके, ये हो गया। The watch broken at 1:15. ओके, तो जो वॉच है H. Which letter is embedded on the handkerchief? H है. Okay. That's the right answer. That's the right answer.
According to the information collected, who would the handkerchief belongs to? Seven people to be identified. Seven. Let's. I must admit I'm not right this time. Think, Poirot. That is not a good answer. Okay. My little gray cells did not let me down. Okay, interrogate. I have to interrogate those who have an initial H in their first and last name. Mr. Murray, Mr. Hubbard, Mr. McQueen. I need to interrogate Astrosine and Countess. Hypotheses about the watch. What are three hypotheses about Ratchet's watch? The watch shows the time Ratchet was found dead. The watch shows the time Ratchet fall asleep. No, not good. Let me consider all the possibilities. Yes, there are only three possible hypotheses. The watch has been tampered with, or it is out of adjustment, or it indicates the time of the murder. I shall explore these last two possibilities before reaching any conclusions. If the watch is out of adjustment, it may be broken. There may also be another reason related directly to Ratchet. Maybe the watch is set to another time zone. Contradictory information. I'm right again. That happens to me a lot. I do not think that's the right answer.
The watch was not defective because the second hand is still moving. That's the right answer. Good job. Good. If this theory is correct, then the murder took place at 12:15 a.m. I must interrogate all the passengers to see if any of them have an alibi for this hour. Monsieur, I am Hercule. I know who you are, Monsieur Poirot. What do you want? Answers to a simple question or two. All right, but quickly. My wife is quite ill. I would like to stay by her side. I promise. First of all, I imagine you know about the murder. Of course. The Countess is terribly distressed. Your full name? Rodolphe Adreny. Your home is? Budapest. And how do you come to be aboard the Orient Express? I am a Hungarian diplomat. My family has represented our homeland since the revolution from the Soviet Union in 1956. I was on my country's business in Istanbul. Business which I cannot discuss. And your wife often accompanies you on your diplomatic missions? Yes, and why not? Was there anything else you wanted to know? My little gray cells did not let me down. Can you tell me how you spent last night? I was in our compartment with my wife. She went to bed early. I played a video game on my phone. Around 11 o'clock in the evening, my wife woke up and couldn't get back to sleep. She took a sleeping pill. As for me, I went to bed soon after that and slept straight through until morning. Have you ever been to the United States? I was posted to the Hungarian embassy in Washington for a year. You knew perhaps the Armstrong family. Armstrong? Armstrong. It is difficult to recall. One meets so many people. It was the kidnapping of a child, a very sad affair. The culprit was the man on this train who called himself Ratchet, the one who was murdered last night. Indeed. It sounds like justice finally caught up with him. Thank you for your time. Now, I'd like to speak to your wife, if you don't mind. It's impossible. As I told you, my wife is very ill. Thank you, and good luck with the investigation. Eh bien, the good Count does not appear to want me to talk to his wife. एलिबाई का मतलब क्या है कि पता रहना चाहिए ना कौन किसके साथ कब था।
Madame Hubbard, may I ask you a question or two? It won't take long. Anything I can do to help. Have you misplaced a handkerchief recently? No, I don't think so. Why? We found a handkerchief embroidered with the letter H, so I thought it might have been yours. I'm sorry, but it's not. It may belong to Miss Schmidt, Princess Dragomirov's lady's maid. I believe her first name is Hildegard. It is a possibility. Anyone could be lying, of course. I thank you, madame. Hello, can I do something for you? Hello, Monsieur Hardman, I believe. You have heard of the murder? Cyrus Hardman, yes, and the fact that there's been a murder is all over the train. You do not seem very concerned about it, monsieur. It's not the first murder I've run across. I had no idea the selling of toys was so dangerous. I did overhear you mention at dinner that this is your profession. Toy salesman is a cover. I'm a private detective, just like you, from the U.S. That was easy. I did not expect to find another detective on this train. I just finished a job in Istanbul when I received an email from Ratchet. He hired me to protect him. Something you failed to do. I'm not happy about that. He'd received some threatening letters. I was supposed to watch his back, and yeah, something I failed to do. But he seemed to think he was in more danger when he left the train. He was traveling to Paris? I assume so, but I'm not entirely sure. Can anyone on this train confirm your identity? Yeah, that McQueen kid. Ratchet's secretary. Were you on duty last night? You bet. I kept my door open a crack and I watched all night. No one entered that car who didn't belong there. Did you see anything in particular? The conductor, Michel. He was there most of the time too, except for 15 minutes or so after we left Vinkovsky. He must have answered a call from Ratchet's room. Then he was absent again for a while around 1 a.m. After that, he didn't move until 5. Monsieur Hardman, have you heard of the Armstrong case? Armstrong? The kidnapping 3 or 4 years ago? Who hasn't? Why? Ratchet's real name was Cassetti. I have reason to believe he was the kidnapper. What? He killed that little girl? No, I didn't know. If I had known, I wouldn't have taken the job. Do you have any idea who was behind the threatening letters? I don't know his name, but Ratchet told me he was a small man. Dark hair, with a womanish kind of voice. Oh, thank you for your help. Is this handkerchief embroidered with an H yours? Do I look like the kind of guy who would use a handkerchief like that? Thank you for answering my questions, Monsieur Hardman. Listen, Poirot. I know I fell down on the job, but if you need help, any at all, let me know. I'd like to make it right. Ah, it has been a while since I have seen one of those. I am not prepared to receive anyone. Come back later. Very well, madam. I'll come back later. But you will need to speak to me.
So, my friend, have you finished your investigation? No, but I have managed to solve a few mysteries. Okay. I stay here to watch this young lady. Excuse me, Doctor. May I ask you a question? Anything that can help the investigation, Mr. Poirot. I wanted to know what your first name is, Doctor. My name is Robert. Why? To find out if the handkerchief embroidered with an H could have been yours. I'm a doctor, Mr. Poirot. Cloth handkerchiefs are a playground for viruses. I would not touch one. I hope your investigation is going well, Mr. Poirot. The Call of the Wild, Jack London. Okay. तो भाई साहब बुक पढ़ रहे थे. Monsieur McQueen, may I ask you a question? Anything I can do to help, Mr. Poirot? This handkerchief embroidered with an H. Is it yours? No, I don't use cloth handkerchiefs. This handkerchief... No, I... Thank you. I won't bother you anymore. I hope your investigation is going well, Mr. Poirot. I am not prepared to receive anyone. Come back. Very well. अरे बुढ़िया एकदम टनटना ये बता ही नहीं रही है कुछ भी. This is wrong.
but I'm never far from the truth. No, not good. हेलो द वाइट डेथ, कैसे हो भाई? कहाँ थे? तुम्हारी आईडी का कुछ हुआ कि नहीं हुआ? Think, Poirot. That is not a good answer. Who are the people whose alibi overlap? Miss Maury and Fisher and were together. My little gray cells did not let me down. My little gray cell did not let me down. Monsieur, if I am to catch this murderer, I will need your help. My help? I am at your service, Poirot. You are obviously a devoted husband, Count Andrini. My wife means the world to me. There were questions in Budapest about a Hungarian diplomat marrying an American woman. It did not deter you. I would have given up my position for her. I would think it is universal. Are you married, Mr. Poirot? No, I fear marriage is not for me. But her condition, is it very grave? She is suffering a bout of vertigo. You understand? The room spins. I think Dr. Constantine could help your wife. There is a doctor on this train? I did not know. Where is this doctor? I think Dr. Constantine is in the lounge car. If not, perhaps the conductor can tell you where he is. Very well, I will find him. Thank you very much. ओके, इसको भी बंद करते हैं, रुको। अब थोड़ा सा अपना BGMI भी खेल लिया जाए गाइस, BGMI।
ओके, तो हमारा बीजीएमआई स्टार्ट हो गया शायद। ठीक है, थोड़ा सा रुक जाओ, ऑडियो ऑडियो काम कर रहा है कि नहीं, नहीं कर रहा होगा, जैसा भी होगा बताना गाइस। टेस्टिंग माइक टेस्टिंग चल रही है। ओके, या बहुत दिन से नहीं खेले, हमको खेलना भी है। हेलो। हेलो भैया। हाँ, कैसे हो नरूटो, बताओ। हेलो। हेलो। हेलो, कैसे हो? मैं तो बढ़िया। अरे मैंने रिक्वेस्ट की है ग्रुप में। कौन से ग्रुप ग्रुप अंदर में? व्हाट्सएप। अच्छा ठीक है, व्हाट्सएप ग्रुप में हाँ। ऐड हो चुके हो? नहीं, रिक्वेस्ट भाई है, रिक्वेस्ट सेंड हुई है, एक्सेप्ट ही नहीं करी हमने। किसने? आपने। मैंने एक्सेप्ट नहीं किया है। चेक करो। यार मुझे पता नहीं था ऐसा कुछ करना है। ठीक है चलो, मैं कर लूंगा। ठीक है, अभी तो मैं वो मोबाइल में गेम लगा लिया हूँ ना, तो चेक नहीं कर पाऊंगा। चल लाइव हो। हाँ लाइव आ गए हैं, थोड़ा सा खेल भी लिया जाए, कंट्रोल वंट्रोल देख लिया जाए। अच्छा। नहीं, हम्म। मैं तो अभी दोस्तों से बातें कर रहा था, आप दिखे इसलिए बोला। ठीक है ठीक है ठीक है ठीक यार, है। ठीक है ठीक है, बाय बाय। हेलो। हेलो। कैसे हो? तो ठीक है, रूम है। रूम तो रखे हैं यार हम, लेकिन कोई हमको जवाब ही नहीं दिया वहाँ डिस्कॉर्ड पे, ना चैट पे आके कोई कुछ कहा है खेलेंगे कि नहीं खेलेंगे। स्कॉट पे तो बोल रहा है, मैं तो बोला ही हूँ, और बाकी दो चैट में 5 लोगों का तो वो है, बोल तो है। हेलो, पॉपुलैरिटी बैटल हार रहे हैं सर जी आप। हाँ हाँ, तो दो पॉपुलैरिटी जल्दी दो। अब देखो जैसा लोग आएंगे तो करेंगे रूम, नहीं आएंगे तो हम कैसे करते बताओ। अच्छा, कल सेकंड वाला प्राइस वाला था कि वैसे ही किया था? प्राइज वाला ही था। अच्छा, हम्म। मुझे लगा बहुत कम बंदा है, प्राइस हटा। अरे क्या ही करें, पता नहीं क्यों नहीं आ रहे हैं सब, पता नहीं कहाँ बिजी हो गए हैं। चलो मिल जाएंगे, एक बार थोड़ा सा हम एडवर्टाइज करते हैं, अब तो होने लगा है ना, तो अब हम एडवर्टाइज कर देंगे तो आ जाएंगे। चलो फिलहाल हम दूसरे आईडी से आते हैं। ये आरपी कब खत्म हो रहा है? पता नहीं। हम्म। देखते हैं, बताएगा अपने आप ही बताएगा कब खत्म हो रहा है। हमको लगता है आरपी 11 11 नवंबर खत्म होगा। लिखा तो है 20 तारीख को, 20 नवंबर को। तो मैं स्ट्रीम पे ही मिलता हूँ, जब करवाओगे ठीक है तब ठीक है। देख के सुनो, बता इस वाली आईडी में पॉपुलैरिटी तो देते जाओ। अरे बाइक क्विक नहीं है तुम्हारे पास? बाइक नहीं है, रुक जाओ, खरीद दे रहा यार एम हूँ। फोर नू। क्या कह अच्छा, रहे हैं, M4 क्या? उस वाले आईडी में होता ना, सारे आईडी से आ जाता। उसमें भी तो पता नहीं यश क्या किया। हम्म। पता नहीं यश क्या किया, मुझे समझ ही नहीं आता कुछ। चलो कोई नहीं, अभी हम क्या नाम है आते हैं, दूसरी वाली आईडी से आते हैं, चलो। इसी पे भेजना है ना? ठीक, हाँ इसी पे भेजना, इसी पे जितना भी पॉपुलैरिटी है इसी पे भेज दो। चलो बाय बाय। भैया लोग दूसरी आईडी से आ जाओ। ये क्या चुतियापा है भाई।
फेस आईडी यूज करो ना, हमारी चकाचक है एकदम। ओके, दूसरी वाली आईडी से हम आ गए हैं, तो अपनी मेन आईडी को थोड़ा सा पॉपुलरिटी दाएं दाएं मार दें, तभी तो काम चलेगा। नहीं तो हार जाएंगे रे बच्चों, हम हार जाएंगे, हार जाएंगे। चलो ठीक, पॉपुलरिटी रे पॉपुलर। गाइस मेरी मेन आईडी पे जाके पॉपुलरिटी डाल दो कम से कम। कहाँ गई मेन वाली आईडी, देखा जाए। प्लीज दी ओल्ड ब्रेट वाईटी वाली आईडी पे पॉपुलरिटी डाल दो यार, जीतना है, ये वाला भी जीतना है। पिछली बार साला हमसे 36,000 रुपये लिया था, 36,000 वो किया तब जाके जीते। ये बताएं ना जाता। कहाँ गया मेरा आईडी? ये है भाई गाइस, इस वाली आईडी, ये आईडी दिख रही है आपको? प्लीज इस आईडी को सर्च करके यार पॉपुलरिटी दे दो यार, दे दो दे दो, हार रहे हैं, देख लो पॉपुलरिटी। पॉपुलरिटी बैटल कहाँ गया? गिफ्ट करें पहले इसको, गिफ्ट करें। ठीक है भाई, बंदा 11,840 पॉपुलरिटी कमा चुका है, बहुत ज्यादा कमा में 1,930 पॉपुलरिटी है। चलो आज देखते हैं आओ, कैसे कैसे पॉपुलरिटी मिलेगा देखा जाए, वो भी दिवाली एक्सचेंज सकते हैं। यो एक दिया मिल गया। एक दिए से 200 वो मिल रहा है, वाह बहुत अच्छा, बहुत अच्छा, बहुत ही अच्छा, बहुत ही अच्छा। चल के इस वाला इसका आरपी कंप्लीट किया जाए पहले, जल्दी से क्या क्या करना है वो देखा जाए। टाइप फर्स्ट एड किट यूज करना है, गीली सीट यूज करना है, इक्विप टू फायर आर्म वो भी करना है, क्लासिक मोड में M249 से मारना, डीबीएस से मारना, पिस्टल से मारना, एनी मोड में, ठीक है। M762 से ही मारना, इतना कुछ करना तो उसमें खेल सकते हैं ना, अनरैंक खेल सकते हैं, अनरैंक ये वाला आफ्टर मैच। इसमें तुम भूजा बना बना मारेंगे, टेंशन ना लो, डुओ लगा लेते हैं, ऑटो मैच मेकिंग। किसी को खेलना हो तो आ जाना गाइस, लीग रिक्वेस्ट है, प्लीज पॉपुलरिटी दे दो, गिव पॉपुलरिटी टू दी ओल्ड ब्राइट वाईटी। गाइस आप लोग का बहुत बहुत धन्यवाद होगा अगर उसमें पॉपुलरिटी मिल गई तो मजा आ जाएगा गाइस। देखो भैया, हमको अपग्रेड करना है ग्लेशियर, कहाँ गया हमारा इन्वेंट्री, बंदूक। अपग्रेड में जाएंगे जब, तो एक अपग्रेड होगा तो ये आएगा एलिमिनेशन इफेक्ट, एडवांस फॉर्म बनेगा, एलिमिनेशन ब्रॉडकास्ट, लेवल जानते हो कितने पे दिखा रहा, लेवल 4 पे, वन हिट इफेक्ट, फाइनल फॉर्म और लूट क्रेट। अरे भैया भैया इतने के लिए तो हम तो, भैया हमको लग रहा हमारी नानी याद आ जाएगी। हाँ बहुत हार्ड है जीतना सर जी, हाँ जीतना है, जीतना है भाई, जीतना है भाई। आज यार मोबाइल से खेलना सीख रहे हैं, थोड़ा सिखा उखा भी दो हमको, कुछ गलती वलती करेंगे तो बताना बताना हमको, ठीक है। This is a simulation game set in a virtual world and does not represent real life.
Please play in moderation, take frequent breaks, and play responsibly. ए मार रही से हम मार रही से भैया, डरने लगी से हैं। कहाँ उतरना है भैया? Let's head to power plant. लेट्स हेड टू पावर प्लांट में उतरते हैं गाइस। मोबाइल से एकदम आदित्य बताओ, मोबाइल से एकदम चकाचक स्ट्रीम चल रहा है कि नहीं? बताओ, एकदम नहीं चल रहा है तुरंत बताओ। Let's head to here. एक गलती से साला मार्क कहीं और लग गया, पावर प्लांट जाना था। अरे भैया हो भैया, दुई लौंडे बीच में उतरे हैं। चलो इधर आ जाओ, इधर इधर लूट उठ के मारा जाएगा। ध्यान से भाई, बंदे हैं, ध्यान से। अरे यार, दोनों सब मेरे ऊपर चढ़ गए। 2 नंबर यही है क्या? कि अरे 2 नंबर भाग गया छोड़ के। अरे भैया ओ भैया, ऐसा साथी छोड़ के भाग गया हमको। Don't give up. Your teammates can still recall you. दुई नंबर बचाओ भाई, क्या कर रहे हो? हेलो, 2 नंबर बचाओगे भाई? भाई इतने दूसरा खेल लेंगे हम भाई, गजब गजब लौंडे हैं। बोले नहीं रहा, मुंह छाला पड़ा है उसके। किससे किससे मारना है? M249 से मारना है हमको, M762 से मारना है। हमारा बंदा छोड़ के भाग गया हमको, देख रहे हो? This is a simulation game set in a virtual world and does not represent real life. Please play in moderation, take frequent breaks, and play responsibly.
अब हम Let's head चलते to हैं। power plant. ये जंप वाला बटन जो बना है ये बड़ा कैसे होता है भाई? अगर किसी को सेटिंग पता है तो बता दो हमको। जंप वाला जो बटन बना है वो बड़ा कैसे होगा ये बता दो अगर किसी को पता है तो। ए भैया क्लच मार दिए रे, क्लच। हमारा टीम में छोड़ के हमको भाग गया रे, बचुआ हमको छोड़ के भाग गया। I got supplies. I got supplies. अरे रो लौंडे, आएगा सप्लाई। मर जाते तो सप्लाई करते रहते तुम। साले सब हमको मारने आए थे, समझ रखे छोटा मोटा, देख रहे हो? दूध दिए साले सब घर चले गए। आग मिली है। भैया मिशन है। जैसे बताए कि तुझको चाहे यारा, बता ना पाए बातें दिलों की, देखो ये बाकी आके तुझे समझा, तू जानना। अबे भाई हो गया। तू जानना मिल के भी हम ना मिले, तुमसे न जाने क्यों नीलों के है फासले, तुमसे न जाने क्यों। कैसे बताए कि तुझको चाहे यारा, बता ना पाए बातें दिलों की, देखो ये बाकी आके तुझे समझा, तू जानना, तू जानना। मिल के भी हम ना मिले, तुमसे न जाने क्यों। है फासले, से न जाने क्यों। कैसे बताए तुझको चाहे यारा, बताना। अब आ भाई, रुक जा यार, खरीद ले, पैसा है तब तक खरीद लेने दो।
762 का काम हो गया। ये भी बढ़ गया। ड्रैगर हटाओ, तो यूज करो। इक्विप बोले तो क्या करो? इक्विप करो गाइस, क्या करो? इक्विप। तो इक्विप कर लो। अब मारना, चलो हो गया सारा काम। लेवल 3 का हेलमेट वेलमेट सब पहन लिए, एकदम चौकस हो गए गाइस। M762 से हो गया है, पिस्टल से मारने वाला करना है। क्लचवा इतना मस्त क्लच किए हैं अकेले। हमारा पार्टनर भाग गया था छोड़ के हमको देख के। Marked a location. बेटा गैला, चल तो गैला हो बबुआ। अरे यार एकदम एक भी इसको कुछ पता नहीं क्या होगा, इक्वल मार ले रहा है। दो प्लेयर और मारना है M762 से।
का हिसाब से मारो यार, हमको भी मानना है। Fuck, man. Help! 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 अबे यार, मेरा हेल्थ बहुत कम हो गया था। This is a simulation game set in a virtual world and does not represent real life. Please play in moderation, take frequent breaks, and play responsibly. चला जा भाई लूटने। लूटने हैं मंत्री रेंटने का चला है। Let's head to Midstein. भैया मिड स्टैंड में सब धो देंगे हमको। हम जा रहे हैं Let's आइस head to Icebrog. चलो फिर बात करें। और में क्या है भाई? भैया हम 2-3 दिन हुआ है मोबाइल में खेलना स्टार्ट किए हैं भाई। अब मिड स्टैंड जाएंगे, सब खेल लेंगे, गड़बड़ा जाएगा। ठीक है, मैं भी आता हूँ, चलो। जल्दी आता भाई, नहीं रहता भाई इधर। सब रहता है, Let's तुम head लूटो to तो। Icebrog. कौन सी गन चाहिए तुमको?
कौन सी गन ढूंढ रहे हो बताओ। M4 M4 मिल जाएगा, चलो मिलेगा दे देंगे। ठीक है। हाँ आवाज आ रहा है भाई बहुत ज्यादा। अरे की आवाज आ रहा है भाई। किसका? आपके उधर से किसी का आ ही रहा है। ये के भाई? M249 कहीं दिखेगा तो मार्क कर देना। कौन सा? M249 मिल गया नहीं मिला नहीं मिला है। हाँ ठीक है देखता भाई। तो क्या तेरे पास भाई? क्या कह रहे हो? हाँ तो कहाँ मार रहे? मार रहे हैं? हाँ इधर से कहीं। चलो यार अभी एक किधर है? वो क्या देखो भाई इसके पास तो मार दिया। क्या कह रहे हो, क्या चाहिए था? कोप स्कोप? कौन सा स्कोप चाहिए? मिल जाएगा 3x। कौन सा वो दे दो। हाँ ले लो 3x ले लो। गिरा दिए भाई। हाँ कहीं गिराए नीचे। ले ले। मार रहा भाई मेरे को छोड़ो। यार M249 हम ढूंढ रहे हैं तो मिल नहीं रहा है। बंदे मिल जा रहे हैं, M249 नहीं मिल रहा है। जब M249 मिल जाता है तो बंदे नहीं मिलते हैं। क्या बताएं, बड़ा समस्या चल रहा है। क्या भाई कितना मार दिया? अभी 3 है। हाँ भाई क्या कह रहे हो आप? चलो जाएंगे सर्कल में। हाँ चलते हैं सर्कल में। चलो बाप रे सर्कल कितना दूर बना है। हम लोग से दुश्मनी था, जैसे ही हम लोग किए सर्कल दूर बन गया है। इसलिए बोल दिया था भाई तेरे को मैं। हाँ अरे तो हमें नहीं पता था ना इतना कुछ होगा भाई। पूरा मैच में चला M249 ढूंढ लिए, नहीं मिला। इसलिए नहीं मिलता उधर। तू लेके जाता था M24 मिलता था वहाँ।
जा रहा है Marked a location. क्या वो बंदे कहाँ? बंदा है क्या कोई? हाँ आ रहे कहाँ पे? बहुत दूर है। आराम से अरे अरे, चलो रिकॉल कर देंगे टावर पे। आओ। 2 बंदा है। कोई नहीं हम रिकॉल मार देंगे यहाँ पे। मैं उसको बाढ़ समझा तो नाक किया उसको, मैं दूसरा आदमी मार दिया मेरे को। कोई नहीं, जल्दी मरे तब मर गए। I'm recalling a नाक किया था teammate. वो, दूसरा आदमी मार Please दिया। recall me. कोई बात जारी है ना, तो वहाँ आए 2 आदमी जाएंगे उधर। Thanks. तो इधर चलो चलते हैं ना, मारा जाएगा उन लोग को। नहीं चलो जाएंगे। जोन में चलते हैं पहले, रुको। इधर कोई मार साला फिर से उसके पास ही आया क्या? मैं तो भाई थोड़ा वेट कर जाता मैं। भाई वहां से निकल लो तो अच्छा होगा। जोन आ रहा है ना। इधर क्या गंदा आवाज है इसका। बड़ा मार रहा है। इधर आ बेटा। फिर से आप उधर चले गए हो क्या? ओ 2 बंदे को मार दिया तो डीपी है। इधर ये देखो। Please recall me. भाई रुक जा दिख नहीं रहा मुझे। ठीक आराम से खेलो आराम। इधर ये माँ को बताओ कहाँ है। अभी मेरा अभी फोन को ये करने के लिए नहीं होता भाई। तू खेल रहा है ना अभी। वो नहीं, जगह को डायरेक्शन दो। इधर ही साइड पे रुको भाई, इधर ही रुको। वो घर में तो है वो। है देखो। जोन में है देखो, जोन में आ रहा है देखो। कल का टाइम जाता भाई। साला रिवाइव हो गया होगा। खोटे उसका युग सोने है।
इसमें हमें 2 अंक प्राप्त हुए। अब हमें वापस से इन दोनों अंकों को जोड़ देना है। जोड़े घटावे कहीं तक निकालेंगे सैंपल जिस जगह का सर्वे करने गए हैं, यानी सैंपल इंटरवल। Please recall me. टॉप पे जाते हैं, रिकॉल कर देते हैं इनको। ठीक है ठीक। हमारा भाई भाई जोन गन चाहिए थी, वो मिल गए नहीं किए पूरा गेम में। तेरी की हमेशा बार बार लगी। हमारे पास पैसा है तो इधर ही शॉपिंग में कर देता। शॉपिंग के बारे में नहीं जा रहा, वहीं जा रहा। अरे यार 2 लौंडे थे शॉपिंग पे, वो सब भी गए थे शॉपिंग पे, वो सब भी ऐसा ही गए। किया कोई नहीं कोई ऐसा नहीं ही कोई किया नहीं मेरे को भी। हाँ? कोई नहीं, क्या कर आईडी सकते। बताओ भाई, फिर से आईडी खेलेंगे। अब आईडी आ जाएगा, अपने आप आ जाएगा, गेम के बाद आ जाएगा। ऐसा आता भाई। अरे आता है ऑप्शन, ये परेशान ना देखो। हो। हाँ गेम में जब जाओगे तो रिसेंट प्लेड गेम के साथ आ जाएगा। ठीक है, फिर से तुम दूसरे साथ खेलने की जाता है ना, इसलिए अच्छा चल रहा हो। हाँ क्या कह रहे हो। हेलो देवेश। यस सर, बोलिए। अरे कह रहे मेरी मेन वाली आईडी पे जरा पॉपुलैरिटी दे दो यार। अच्छा उस पे ओके। मन भर के जितना पॉपुलैरिटी हो सब दे दो, हार रहे हैं हम। प्लान से खरीद ले। लाइन से खरीद लो। मिल गया। कितना आ गया? एक ही है। ठीक है, आपकी वो वाली आईडी कहाँ है कहाँ है? होगी, नीचे होगा नीचे होगा। अब कुमार की 11,000 पहुंचा देंगे, पता नहीं कौन सा पॉपुलैरिटी दे रहे हैं सब। अरे बाप रे। दिया हुआ मिला है तो दिया हुआ या पुराना कुछ हो, सिनर्जी वनर्जी वाला तो दे दो जरा उसमें। सिनर्जी से नहीं बढ़ता सर। और सिनर्जी कह रहे वो इवेंट वाला इवेंट में तो कुछ भी नहीं है। नया फुल ब्लेस आया है क्या सेट टोट। मेरे पास ये ड्रॉप पड़ा थी। हाँ ड्रॉप दे दो ड्रॉप।
1.21 के क्या कितना गया है? 1.21 के पूरा मिलाकर। अच्छा 1.21 के, हाँ तो ठीक ही है। चलो यार, वो बैन हो गया था, आईडी आज अनबैन हुआ है। अबे तुम इसी वाले में दे दियो क्या गलती से? इसी आईडी में दियो क्या, जिससे जुड़े हम लोग? तेरी हम किसी और को दे दिए, जानते हो किसको? सुनिए। किसको? बैटल एंजल को। अरे यार। रुकिए 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 रुकिए। अरे काहे दिखा नहीं रहा है बैटल पॉपुलरिटी बैटल। यहाँ तो क्लेम सब आएगी नहीं। अच्छा ये देते हैं, हम ध्यान ही नहीं दिए हैं। इस वाले आईडी में नहीं देना है, वो वाली आईडी देना है जिसमें व्हाइट रंग का ड्रेस है। हाँ उसी पे उसी पे। 2 दिन 8 घंटा है, बटोर ले यार जितना पॉपुलैरिटी मिल रहा है। अरे हम ध्यान ही नहीं दिए हैं, देने के चक्कर में इस पे दे दिए सब। इवेंट इवेंट इवेंट। अब क्या देंगे? हाँ रुके रुके, दबाओ, मिल गया और मिल रहा हाँ हो गया ना। देखिए अब यार तुम 1 पॉइंट के उसको दे दियो, सब गड़बड़ा गया है पूरा 1000। चले कोई ना, अभी दे दिए देखिए। पता नहीं कहाँ है, सॉरी क्या कर रही है समझ में नहीं आ रहा है। अरे नहीं अभी देखिए, दे दिया तो। अरे अभी दिया हुआ मिलेगा ना तुमको खेलने पे? हाँ अभी खेले तो नहीं है कभी। हाँ अभी खेलोगे तो दिया मिलेगा 5-6 तो वो दिया दे देना। हाँ समझे। दिया ये जो अभी नया इवेंट आया है। हाँ वैसे हमें कुछ देना तो नहीं है इवेंट से, दिया दिया। अच्छा ये चलो मैं पानी पी के आ रहा 1 मिनट। और हम तो वो कर रहे हैं, अभी तो मोबाइल से खेल रहे हैं ना, थोड़ा सीख उख रहे हैं, तुम लोग साथ नहीं खेल पाएंगे, तुम लोग बहुत मतलब खतरनाक खेलते हो। हाँ हाँ बोलो बोलो। कह रहे हैं 14 दिया मिला है, 14 गो। हाँ तो जाओ तो 14 डीए डालो। किस आइडिया दूसरे में न डाल दे। नहीं नहीं देख लो, उसमें तो सफेद रंग का कपड़ा पहने हैं, लास्ट में खाली वाइट ही लिखा है। ओल्ड ब्रेट वाइटी इनमें आ गए, यहाँ का गए। दिया है कहाँ, दिया वेर इज दिया। इवेंट्स में होगा ना। 14 दिया गया सर। गया। के जो आ गया दिया, हाँ ठीक है, आ रहे पानी पी के आ रहे 1 मिनट। सर क्या रखे दे दिए सब, बाप रे। जेठालाल मेरा भी चल रहा है कि मैं भी देखता है। हाँ हाँ यार, सॉरी 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 प्रो प्लेयर्स, एकदम एकदम। एक काम करो, हम आज आज डाल देंगे, आज तक पक्का डाल देंगे 100%। वो एकदम ध्यान से उतर गया था मेरे, वो वाला याद आ गया यार, एकदम ध्यान से उतर गया। कस्टम हो रहा है सर क्या? हाँ भाई, तुम कहाँ हो, तुम्हारी टीम का कुछ पता नहीं चल रहा है। टीम टीम मत बोलिए, टीम खत्म खल्लास। तो सब हमारे पास बंदा है, वो खेलना चाहता है, उसके साथ खेलोगे?
उस टाइम तो ठीक है, देखते हैं। हाँ देख लो, मतलब आराम से, जो भी अभी टाइम है। कौन है वैसे, नाम बताइए। अभी नहीं खेला अभी तक कस्टम रूम में, उसके पास टीम नहीं है ना, 2 ही लोग हैं वो लोग। हम नंबर तुमको सेंड कर देंगे, तुम बात कर लेना व्हाट्सएप पे। ठीक है फिर। ठीक है, हम वो कर रहे हैं अभी, क्या नाम है अभी, क्या कहते हैं, नहीं, पुश कर रहे हैं, आरपी कंप्लीट कर रहे हैं। हम्म। आप डिस्कॉर्ड पे डाले थे फ्रेंडली कस्टम है। हाँ फ्रेंडली कस्टम है, तो डिस्कॉर्ड का टाइम पता है कितने बजे का? 8:40 का। कहाँ थे तुम उस वक्त? कोई आया ही ना, ना कोई चैट पे कोई कुछ बोला, तो हम क्या करें बताओ? जब तक इंटरेस्टेड बंदे आके हमसे बोलेंगे नहीं तो हमें पता कैसे चलेगा? अरे नहीं, एक काम करिए सर, वापस अगर सबको मतलब जोड़ना है तो पहले आप 1v1 इंटरेस्टिंग कराइए, अब ना सब जुड़ते जाएंगे। हाँ हम थोड़ा सा वो भी बात किए हैं टेलीग्राम इंस्टाग्राम पे, तो स्टोरी स्टोरी लगवा देंगे पैसा देके, तो उससे भी लोग आ सकते हैं शायद। प्रमोशन, हाँ। प्रमोट करवाते हैं। लगेगा लगेगा, अब तो मोबाइल आ ही गया है, मोबाइल से हो ही रहा है स्ट्रीम, कोई दिक्कत है नहीं, चकाचक चल ही रहा है। अब तो होगा ही। अरे यार जानते हो, जैसे ही हम टूर्नामेंट खत्म करवाए, कस्टम रूम कराने वाले थे, तब तक वो बीजीएमआई का अपडेट आ गया। उसके बाद उस पे कुछ चल ही नहीं रहा ब्लू स्टैक पे, कोई भी खेल रहा उसको बैन मार दे रहा 2-3 दिन के लिए। मतलब एमुलेटर में चल ही नहीं रहा है। नहीं चल रहा है वो, पता नहीं क्या, ना बता रहे हैं क्यों नहीं चल रहा है, क्या दिक्कत है, क्या ठीक करो, कुछ नहीं बता रहे हैं सारे सब। कल अभी मेरे कस्टम रूम में एक बंदा खेल रहा था, उसकी उसकी आईडी बैन कर दिए सब। हम लोग का सबसे दिमाग खराब हुआ था आपका उस वाले कस्टम में जिसमें हैकर खेल रहा था, दिमाग खराब हो गया वो, हम ही लोग को मार दे रहे थे सब घुस के। अरे यार कोई जानता नहीं, लेकिन आ जाते हैं सब, क्या ही बताएं अब हम। नहीं तो अब हम वो डिस्कॉर्ड पे, वो व्हाट्सएप पे कम्युनिटी बनाए हैं, ठीक है, उसकी हम लिंक तुमको दे देंगे, तो जिसको जिसको इनवाइट करना होगा कर लेना। ठीक है ना, चल हम करते हैं अपना मिशन, और थोड़ा वो सीख भी रहे हैं मोबाइल से खेलना। ठीक है ना, चल हाँ आप जाइए। ठीक है। This is a simulation game set in a virtual world and does not represent real life. Please play in moderation, take frequent breaks, and play responsibly. I got 5 eliminations just now. Good luck, mates. Let's head to Blomster. ब्लामस्टर चलते हैं भाई, ब्लामस्टर। पता नहीं पिस्टल तो नहीं मिलता हमको, लग रहा है इस मैच में। अबे भाई के भाई, M249 कहीं दिखेगा तो मार्क कर देना, ठीक है। I need a weapon.
कैसे बताए कि तुझको चाहे यारा बता न पाए बातें दिलों की देखो आँखें की समझाए तू जाने ना भाई M249 मिले तो यार बताना यार हेलो द वाइट डेथ कैसे हो भाई आओ खिला जा साथ में I got supplies. M24 है क्या उसके पास आ रहा भाई आओ द वाइट डेथ आओ जरा खिला जाए इसमें दिल्ली शूट वाला भी मिशन हो ही गया होगा ये कहाँ मार्क किए थे यार देखें जरा ये यार ये तो M762 है हमको ये नहीं चाहिए
Watch are enemies nearby. Watch out. Watch out. दोनों ओर से फंस गए Watch हैं out. Watch out. Watch out. Watch out. Watch out. Watch out. Please recall me. Awesome. अरे भाई मार दीस भाई जब M24 कसम से मिशन है तो एक को मिल नहीं रहा है अब आगा M249 EBS करना है और वो भी करना है ना 7 टाइम इक्विप 8 टाइम इक्विप करना है ठीक है This is a simulation game set in a virtual world and does not represent real life. Please play in moderation, take frequent breaks, and play responsibly. उसको हमको लग रहा हम ऐसे मारे होते ना लास्ट टाइम तो आराम से मर गया होता Let's head to Crabgrass. Let's head to Crabgrass. भाई M249 दिखेगा तो मार्क कर देना
ये बॉट अच्छा है, काम किया था आके। एक बंदा है यहाँ पे, कोई स्नाइपिंग कर रहा है। कितना, अरे भैया देख लो, शील्ड 3 शील्ड खोला है दाएं से।
पैसा रे पैसा, अरे भैया बड़ा पैसा है। जुनवा बहुत तेज है भैया, जुनवा बड़ी तेज है। पैसा हमारे पास भरा पड़ा हुआ है, लेकिन कौनो मार रहा है का 2 नंबर को? ये 2 नंबर मार रहा है, कहना मुश्किल है। भाई आ जाओ जोन में, आ जाओ जोन में। शॉप है क्या? शॉप यहीं कहीं? हाँ ठीक है, शॉप पे जाएं। क्या खरीदने का काम हो जाएगा? एक्सटेंडेड मैगजीन खरीदने का काम हो जाएगा यहाँ पे। कैसे बताएं कुछ कुछ। बंदा इसी घरों में। Marked a location. भैया बहुत पैसा खर्चा किए, बताओ कहाँ कहाँ खर्चा किए हो? सब दे दो। वही रहना भाई, आ रहे बैठे रहो। बेचारा अपने ऊपर ग्रेनेड वो फोड़ लिया है। जब देखा हम आए, गबर गबर अपने ऊपर ग्रेनेड फोड़ लिया है। भाई बंदा है बाहर। बंदा यहाँ है। Marked a location.
ओमी सामा लग गई। We're the best. Okay, finally. एक 180 आरपी 2 से रिवाइव करने का मिला है, 3 एनिमी मारने का मिला है, और इक्विप टू फायर आर्म फुल अटैचमेंट वाला भी हो जाएगा। आओगे कब जी? खाएंगे। टीबीएस से सूतना है, पिस्टल से मारना है। टीबीएस से पिस्टल मार थोड़ा गड़ा रहा है। खाना रखा हुआ खा लेना। क्या है खाने में? पनीर की सब्जी है, चावल है, आंवले की चटनी है। सब्जी चावल और चटनी ठीक है, खा लेंगे। टीबीएस वाला मारो। 99 आरपी हो गए, 2 पॉपुलैरिटी मिला। और बताओ क्या है? पिस्टल वाला 1 से हो जाएगा क्या? पिस्टल वाले के लिए भी 2 लग रहा है। तो अभी तो वीक 6 खुला है ना। वीक 7 तक होगा तो ये क्या है? तो इस वाले में नहीं था, उस वाले दूसरे वाली आईडी में। सॉरी माय फ्रेंड, सॉरी, यू नो आई एम सॉरी। पॉपुलैरिटी मिला भैया, पॉपुलैरिटी दागना है। ये सब पॉपुलैरिटी थोड़ा सा लेट दागेंगे उसमें। इससे होगा यूं, देखो 11,000 कोई देख के उसको निकल लिया है। हम भी कुछ व्यवस्था करेंगे। क्लैन में जाएं जरा, क्लैन वाला खरीद सकते हैं क्या? गाइस पॉपुलैरिटी दे दो यार। मेन वाली आईडी, आईडी का नाम है दी ओल्ड ब्राइट वाईटी, उसमें पॉपुलैरिटी दे दो यार। आप लोग देख रहे हो यार, पॉपुलैरिटी तो दे दो, दे दो यार, दे दो, दे दो, दे दो, दे दो, दे दो। दे दो, दे दो, हमको भी पॉपुलैरिटी दे दो। देखिए बचा है क्या, कितना आरपी, मतलब क्या क्या मिशन बचा है। सीजन एंड वाले में सिर्फ यही बचा है ना, सारा मिनट हो गया। एक बार और हमको फुल अटैचमेंट करना है, वो हो जाएगा। इस वाले में कितना है? 3 और फुल अटैचमेंट करना है। पिस्टल से मारना है, मेडिकेट यूज करना है, तो हमको उसमें खेलना पड़ेगा। रैंक खेलना पड़ेगा, रैंक खेला जाएगा एकदम दाएं रैंक खेला जाएगा, कोनो बिना संकोच के रैंक खेला जाएगा गाइस। लड़की के नाम पे देखें क्या क्या मिल गया है। 2 टू ही मिला है, 1 टू ही है, तो कुछ है।
हेलो मार्शल भाई। यार मेरी मेन वाली आईडी पे जरा वो मार दो, क्या नाम है, पॉपुलैरिटी। Okay. भैया ये सब तो इतना जीत रहे हैं, हम खाली हार रहे होते हैं धनाधन धनाधन। कितने बचे? हम्म। कितने बचे हैं उसमें? अरे अभी 2 दिन 35 से कुछ। अभी 2 दिन कुछ मिनट है। ऐसे पीछे हो, अभी तो बहुत पीछे हो। 11,000 अभी होगा उसका। पीछे तो ही अभी। अरे पिछला वाला जो जीते हैं ना, अगर वो बंदा हमको 50 बाइक नहीं दिया होता तो हम हार गए होते। 50 बाइक दिया तब जाके हमारा कुछ उम्मीद बना है तो हम जीते हैं पिछला वाला भैया। पता है 35,000 अपना पॉपुलैरिटी किया था वो, पता नहीं कहाँ से। वो मांगते रहते हैं वर्ल्ड चैट से, भीख मांगते रहते हैं उससे। क्या लगाए हो तुम लोग? लिरिक। लिविक लगाए हो यार, इरेंगल ही लगाए हो तो कोई दिक्कत नहीं था। किल मिलते हैं लिरिक। बस चेक करना। This is a simulation game set It in a is virtual world showtime. and does not represent real life. Please play in moderation, take frequent breaks, and play responsibly. Let's fight together. Let's fight together. Let's head to Aerolith Lab. I need a weapon. I need a weapon. कौन वाला वेपन चाहिए? कोई भी मिल जाता है। चलो तुमको बजूका दिलाते हैं, ठीक है? छोटा मोटा नहीं, बजूका। हाँ Okay. Karakin. Let's head to here. Head toward Smell. this point. Head toward this point. इसी में आना सब। I got supplies. पंखे के सामने बैठे हो गया। Marked a location. Marked a location. एक बंदे को नॉक किए हैं, सामने वाले घर में नॉक किए हैं। किधर अरे यार बता नहीं पा रहे हैं इस वाले में। Marked a location. चलो तो। नहीं मार देंगे सब बंदे। देखा नहीं जाता बंदा। नॉक डाले तो चलो। मिला क्या? मिल गया। Thank you. Awesome. Watch out. Watch out. Help. Thanks. It's safe here. Save me. भाई 5 तो आ गए या बैग तेरी, यहाँ सब आ गए। फिर से वहीं चलना है। ना मिर्च। Let's head to Midstein.
बंदे होंगे। बंदे हैं, बंदा है, इधर है, इधर Marked है। a location. हाँ, मेन पे उधर है Marked a इतना location. इतना है पता है। Marked a location. दिखेगा नहीं। नहीं नहीं, किसी और को मारे हैं। पता है किधर था वहां से। चल तेरा बंदा वेट कर आ रहा। Help! Watch out! It's safe here. Save me! आ रहे हैं। It's safe here. Save me! Thank you. Awesome. सेफ Thank you. अब इस घर में कोई नहीं ना है। No. एक ही था। हम तो फॉलो कर I got supplies. Awesome. Thanks. कहाँ बैठे हो भैया? कौन हम? क्या हो रहा है? आवाज आ रहा है क्या बड़ा वैसा? गाड़ी आया, गाड़ी आया। मार लो कि हम नहीं नहीं, आओ बाहर आओ, बाहर आओ, मार देगा, मार देगा। मार दिया यार। यहाँ पे बंदा पीछे। Watch out. पीछे सेफ आ गए हैं। मार दिया, मार चुके। आ रहा है मेरे पास आ रहा है, मेरे पास आ रहा है। हम पे ध्यान रखना, वो आएगा। मार दिस। अब तो जिंदा Awesome. होंगे नहीं कि Watch जिंदा out. होंगे। Thanks. माशाल्लाह मुझे रिवाइव। It's safe here. Save me. Thank you. मार्शल रिवाइव हो जाएगा। Thank you. Thank you. Watch out. Awesome. एक मिनट। Thanks.
Marked a location. Watch out! बाहर आजा भाई। 4 नंबर लोलू है, पता नहीं अकेले कान का कर रहा है। Awesome. Thanks. चलो गाइस, अब लेट हो गया थोड़ा। आज मैं वैसे भी लेट से आया भी हूँ, ठीक है। तो आज की स्ट्रीम यही खत्म करते हैं गाइस, और मिलते हैं कल शाम को। कल शाम को हम लोग कस्टम रूम कराएंगे, वो भी प्राइज वाला कराएंगे। परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। मैं उसके लिए उसके लिए मैं नोटिफिकेशन डाल दूंगा डिस्कॉर्ड पे अच्छे से, और व्हाट्सएप ग्रुप पे भी लोगों को मैं जोड़ रहा हूँ। अगर आप व्हाट्सएप चलाते हो तो आप जुड़ जाओ, आपको इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी गाइस। तो बाय बाय, लव यू गाइस, टेक केयर, एंड प्लीज पॉपुलैरिटी जरूर दे देना गाइस। बाय बाय, पॉपुलैरिटी जरूर देना। बाय बाय।